Hello students, welcome to my YouTube channel Divya Singh's Socio Lab. I hope you all are doing well. Okay? So student, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था that I am going to give you detailed analysis of class 9th portions for 2026 and 27 portion. So student, today's class is about the detailed analysis. So students, before we go to the detailed analysis, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि last class only I told that there are going to be two parts. So as there are two books, two parts are there. So in today's video, we are going to discuss about part 1. Okay, and part 2 we will discuss in the next video. So today's session is about detailed analysis of class 9th portion part 1. Okay, now I'll quickly take you to the detailed analysis. So I am sharing my screen with all of you. Okay, I hope now you all can see the screen, right? So let's start with the detailed analysis. So students, ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था कि part 1 and part 2 together comprises of 16 topics and it will take 130 plus hours to complete this 16 topics. Children, ये जो topics, hours and parts, it is all given by CBSE. Okay, so that is what we are following here, right? So now next slide, I'm taking you to the detailed analysis of part 1, which is your book 1 concepts. Okay, let's start with first chapter, understanding social science. Children, actually we are learning history, geography, civics and economics. So जो पिछली 4 books थी आपकी, okay, class 9th की, उसमें the scope of history, the scope of geography, the scope of civics and economics, it was not there. So इस बार first chapter ही ये बताता है कि what do you understand in social science, and we are studying this history, geography, civics, economics. इसका scope क्या है? Okay, so the first chapter is about understanding the scope and relevance of the history, geography, civics and economics. Okay, next chapter is shaping of the earth surface. Children, ये chapter आपकी पुरानी 9th की NCERT बुक से काफी मिलता जुलता है. इस chapter का नाम पहले हुआ करता था physical features of India. ठीक है, अभी the name is changed to shaping of the earth surface, but the topics are quite similar, right? Like theory of plate tectonics, interior of earth, कुछ very important concept होते हैं like weathering, इरोजन, डिपोजिशन, इसका क्या रोल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट चिल्ड्रन, इसमें एक अनदर टॉपिक जो ऐड किया गया है वो है डिजास्टर्स. ओके, which are the natural disasters we have. So इस टॉपिक में they are covering 2 natural disaster, which is earthquake and landslide. Okay, so this is about shaping of the earth surface. Now third chapter is student atmosphere and climate. Children, climate chapter पहली NCERT books जो थी उसमें भी था. ओके, और ये one of the very important topic रहा है उस समय भी, and now also it is very important. So इस chapter में what you are going to study is you are going to study about what is the difference between weather and climate, what are the different seasons we have in India, and also children, we are going to understand about the atmospheric layer, okay, by using different sketches and diagram. Children, I was telling you about the chapter shaping of the earth surface, जिसपे उन्होंने 2 natural disasters cover किए थे, which was earthquake and landslide, but atmosphere and climate we are going to cover flood as well, okay, as a natural disaster. Now children, जो next chapter आपका add हुआ है, this is completely new chapter, early humans and beginning of civilization. It is a completely new chapter
Okay, and what you are going to study here is about archaeological ages like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, different archaeological ages के बारे में हम deep analysis करेंगे इसमें. And children, ये chapter में you also have one very important topic which is regarding civilization. So we're going to study about Harappan, Mesopotamia, Egyptian and Chinese civilization. So children, this is the newly updated chapter, newly added chapter actually. ओके ये चैप्टर आपके पिछले एनसीईआरटी बुक्स में नहीं था, ये न्यू कंप्लीटली न्यू चैप्टर है. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर इज डेमोक्रेसी. चिल्ड्रन ये पहले भी था, एंड डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, राइट? सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी what is the meaning of democracy, what are the features of democracy, and in India how is democracy, what are the challenges to democracy in India, we are going to study in detail. इस चैप्टर में हम एक और चीज पढ़ेंगे कि what is the difference between parliamentary system and presidential system. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है इलेक्शन. ओके, सो चिल्ड्रन, इसमें हम डीप एनालिसिस करेंगे कि what exactly is election, what is the importance of election, why do we need election, and children, how election takes place in India, and कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करती है. So that is Election Commission of India. So we are going to study in detail about that as well. Children, ये चैप्टर आपके पिछले एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड है, उसमें भी ये था. ठीक है. Now children, the next chapter which is coming here is building blocks in economics. Children, ये एक completely new chapter है आपका. ठीक है, which will tell you about जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, what do they exactly do, what is the scope of economics. And children, आप इकोनॉमिक्स में समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्टली हम अपने मार्केट डिटेल्स के बारे में समझते हैं. हमारे डिफरेंट इकोनॉमीज है, लाइक हमें इसमें डिफरेंट इकोनॉमीज को समझना है, जैसे सेंट्रली प्लान मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दैट. ऑल्सो हमारी एक और इकोनॉमी होती है वेलफेयर इकोनॉमी, उसके बारे में भी हम इसमें डीप एनालिसिस करेंगे. ओके, एंड चिल्ड्रन, हमारी इकोनॉमी में हमें क्या प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ चिल्ड्रन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज स्टडिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. चिल्ड्रन, हमारा जो 11th-12th का इकोनॉमिक्स होता है, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है डिमांड और सप्लाई का, वो इस बार आप 9th में ही पढ़ने वाले हो. ओके, सो किसी चीज का अगर प्राइस से डिमांड का और सप्लाई का रिलेशन क्या है. ओके, सो चिल्ड्रन, डेफिनेटली कभी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होता है, और प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, विच आर वेरी सिमिलर टू आवर रियल लाइफ, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सो चिल्ड्रन, this was your डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट 1. चिल्ड्रन, मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि जो हमारी पिछली बुक्स थी वो मोर ऑफ अ रोट लर्निंग थी, और जो इस बार जो क्लास 9 की बुक्स आने वाली है वो रियल लाइफ एनालिसिस पे बेस्ड है. So that is why we are going to understand the real life analysis. Like मैंने अभी just now I gave you one example. Like suddenly किसी चीज का प्राइस अप जाता है तो डिमांड कम हो जाती है. ओके, सपोज लाइक सडनली गोल्ड का प्राइस बहुत हाई जा रहा है तो डिमांड कम हो रही है. सो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी रियल लाइफ से लाइक जुड़े हुए हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके, सो दिस टाइम the books are very much based on real life analysis. So children, now ये आपका this was your part 1. part 2 के लिए you have to wait. Okay, and till that time what you have to do is you have to subscribe to my YouTube channel Divya SINGH'S Socio Lab, and wait for the next video coming soon for part 2. Till that, stay connected and stay healthy. Okay, and keep watching my videos. Okay, thank you so much. See you all
in the next session. Okay. Thank you all, children. And I hope you are liking my videos. Okay. Thank you so much. And don't forget to subscribe Divya Singh's Social Lab. Thank you.